தசகம் 33 கௌதம கதை. சக்ரபுராஜீவகணஸ்ய கர்ம தோஷாத் சமாபஞ்சதசக்ஷமாயாம் वृष्टिं न चक्रे धरणी च शुष्कवापि तडागादि जलाशयासि सस्यानि शुष्कानि खगान् मृगांश्च भुक्त्वाप्यतृप्ता क्षुधया तृषा च निपीडिता मर्त्यशवानि चाहो मर्त्या अनिष्टान्यभिपुञ्चते स्म क्षुधार्तिता सर्वजना महापद्विमुक्तिकामा मिलिता कदाचित् तपोधनं गौतममेत्य भक्त्या पृष्टा मुनिं स्वागमहेतुमुचुः विज्ञाय सर्वं मुनिराट् कृपालुः सम्पूज्य गायत्र्यभितां शिवे त्वां प्रसाद्य दृष्ट्वा च तवैव हस्ताल्लेभे नवं कामदपात्रमेकम् दुकूलसौवर्णविभूषणानवस्त्रादिगावो महिषादयश्च यत्यज्जनैरीप्सितमाशु तत्पात्रतो देवि समुद्बभूव रोगो न दैन्यं न भयं न चैव जनामितो मोदकरा बभूवुः ते गौतमस्योग्रतपप्रभावम् उच्चै जगुस्तां करुणार्द्रतां च एवं समाद्वादश तत्र सर्वे निन्युः कदाचिन्मिलितेषु तेषु श्रीनारदो देवी सशिव गायत्री आश्चर्यशक्तिं प्रगृह्णन्नवाप स पूजितस्तत्र निषन्न उच्चैः निवेद्यतां गौतमकीर्तिलक्ष्मीं सभासु शक्रादिसुरैः प्रगीतां जगाम सन्तो जगृषुकृतज्ञाः काले धरां वृष्टिसमृद्धसस्यां दृष्ट्वा जना गौतममानमन्तः आपृच्यते सज्जनसङ्गपूता मुदा जवात् स्वस्वगृहाणि जग्मुः दुःखानि मे सन्तु यतो मनो मे प्रतप्तसङ्घट्टितहेमशोऽपि विशुद्धमस्तु त्वयि बद्धरागो भवानि ते देवि नमोऽस्तु भूयः। ओम श्री मात्रे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।